ધન જાય વરણ્યો રે આંબો મોર્યો રે અરે ભૂતલ માયા રસ ભરવા વાલો મારો બ્રહ્માએ જાચીને તેડ્યો નરસૈયા સ્વામી સુફલ ફલ્યો આંબો બ્રિજ વિનતાએ વેડ્યો રે આંબો મોર્યો રે મુને ગિરધરે ગેલી કીધી રે સૈયર શું કહો છો મારી બુધરીને લીધી રે સૈયર શું કહો છો સંતતની સે રડીએ રે ગઈ તી બેની મેં તો સહેજ સ્વભાવે જોયું વિઠ્ઠલ વરતા રમતા રે દીઠા ત્યાં થકી મનાડું મોયું રે સૈયર શું કહો છો આગે મેં મોટે રારે જોયા હારે બેની બ્રહ્મા શંકર સરખા આને અવસર જાદવને રે જોતા ભાગી ભૂખ ગઈ તરસ્યા રે સૈયર શું કહો છો સર્વે મળી વૈકુંઠ વખાને હારે જેને ધામ મુગતનું દીઠું બંસી વટ વંદાવન જોતા મુને અવરણ લાગે મીઠું રે સૈયર શું કહો છો પરબ્રહ્મ પરમાધામના સ્વામી અરે એનું નિર્ગુણ નામ દ્રઢ ગણીએ કહે ના હો ના એ તો ત્રિભુવન તારણા સમરણતા કેમ રહીએ રે સૈયર શું કહો છો બલિહારી રે નાથ મુને મૂકે તારા ચરણ થકી અલગો હારે તારા ચરણ થકી અલગો નાથ મુને મૂકે અમો પરમારથ કૈર ન જાણું તારા નામ નાવલ જ્ઞાન હરે તારા નામ નાવલ જ્ઞાનાથ મુને મૂકે બલિહારી રે વાલે મારે વિઘન હર્યા એવા વિઘન હર્યા કઈ વાર હરે એવા વિઘન હર્યા કઈ વાર કોકુડિયું રે લાંતો રે રાખ્યું વાલો બ્રિજની કીધી સહાય હારે વાલે બ્રિજની કીધી સહાય નાથ મુને મૂકે તમોરે અમારે ને અમોરે તમારે હરે વાલો અંતર નહીં લગાડ નાથ મુને મૂકે નરસૈયા સ્વામી એટલું રે માગું મારા ભગવાનની વાત હારે મારા ભગવાનની વાત નાથ મુને મૂકે બલિહારી રે જે નરજી જારે આવ્યા હરિરસ કીર્તન માય હારે આવ્યા હરિરસ કીર્તન માય જે નરજી લ્યાર પરલોકે પાલવના સોહાય એ તો જીવન મુગત કહેવાય હારે તે તો જીવન મુગત કહેવાય
જે નારજી જાણ બલિહારી રે ભવ જલ નિધિ તરવા બીજા નથી રે અવર ઉપાય હારે બીજા નથી રે અવર ઉપાય જે ભવ જલ નિધિ તરવા કેશવ કીર્તન કરો રે નિરંતર તમો લજ્જા ચાડીને ગાવ હારે તમો લજ્જા ચાડીને ગાવ જે નરજી જાણ બલિહારી રે આ દેહ તીર નહીં તેને પડતા ન લાગે વાર હારે તેને પડતા ન લાગે વાર આ દેહ તીર નહીં બને નરસૈયો સંતો રે લૂટો આવા ગોવિંદ ગુણ ભંડાર હરે આવા ગોવિંદ ગુણ ભંડાર જે નરજી જાણ બલિહારી રે જે નરજી જાણ આખલડી નો ચારો રે આખલડી નો ચારો રે સામળિયો જી કરી ગયો રે હવે કેમ જીવો રે મોરી માય મોર પીછ મુંગટ રે મોર પીછ મુંગટ રે સુંદર સોહામનો રે કુંડલ મીનાકાર સોહાય આજે હું ઊભી રે આજે હું ઊભી રે આંગણીએ આપને રે આની વાટે જાતા રે હું કાન મીઠો ને મેલાવો રે મીઠો ને મેલાવો રે અમને તહાવો રે વાલે મારે કીધી રે નહીં નાની શાન વેન વાહીને રે વેન વાહીને રે વને માતેડિયા રે હારી અમને મૂક્યા છે ઘરના કામ વાલો મારો રમે રે વાલો મારો રમે રે આંખ મીચામણી રે હરી હવે થયા છે અંતર ધ્યાન હું ને સાહેલી રે હું ને સાહેલી રે જોવાની સર્યા રે જોયા જોયા વૃંદાવન મોજા નરસૈયાચા સ્વામી રે નરસૈયાચા સ્વામી રે આ જોવાની સર્યા નરસૈયાનો સ્વામી રે નરસૈયાનો સ્વામી રે કાઈ મને તહા મળ્યો રે ધનયા હિરડાનો અવતાર ધનયા હિરડાનો અવતાર જીરે પાછલી રાતના નાથ પાછા ફર્યા શું કરું સખી હું નાર જાગી નિરખતા નિરખતા નિંદ્રયા આવી ગઈ બોલ પાડ્યો હરિયે બિરદ પાગી જીરે કહા હસે કૃષ્ણજી સો ક્ય સુનતે વલી પ્રથમ જયનાથ ને પાય લાગુ સરળ છે શ્યામળો મુખ સે આમળો માવ પાસે જઈ માને માંગુ ચિરે ઉઠયા સતજી નથી ગયા નાથજી દ્વારયો બાહરી હેત જોવા બને નરસૈયો એ તો પ્રેમ ને વસ થયા ઘેર જાઉં પછી ઘેર દોવા ચિરે પાછલી રાતના નાથ પાછા ફર્યા શું કરું સખી હું રે જાગી જીરે જાગને જાગવાથી કૃષ્ણ ગોવાળિયા તુજ વિના ધ્યાનમાં કોણ જાતે
ત્રણસે ને 60 ગોવાળ ટોળે મળ્યા, વડો રે ગોવાળીઓ કોણ થાશે? જીરે દૈતના દૈતરા ગીતના ઢેબરા, કળિયેલ દૂધ તે કોણ પીશે? હરિ તારો હાથીઓ કાલીના ગનાથીઓ, ભૂમિનો ભાર તે કોણ હરશે? જીરે ઝુમના ને તીરે ગોવર્ધન ચરાવતા, મધુરસી મોરલી કોણ વાસે? બને નર સયો તારા ગુણ ગાઈ રીજવે, ઉડતાની બાયડી કોણ ચાલશે? અલ્યા જાગને જાદવાસી કૃષ્ણ ગોવાળિયા, તુજ વિના ધ્યાનમાં કોણ જાશે? मैं जोगी जस गाया बाबा, मैं आनंद जस गाया रे, अलख अलख करता योगी जी बीज मंडल में आया रे। भिक्षा लेकर आई नंद रानी, शंकर से डोलाया रे। नगन देख कर गए मंदिर में, लेकर आंबर उड़ाया रे। क्या करूं मैया तेरा पाठ पीतांबर, क्या करूं कांचन माला रे। मुख दिखलाव तेरा बालक जी का, गुरु जी मोहि बताया रे। दो कर जोरी कहे नंद रानी, सुन हो शंकर राया रे। न बालक नहीं दिखलाऊ दिगंबर, बालक जात डराया रे। जाकी दृष्टि सकल घट व्यापी, सो क्यों जाय डराया रे। मेरा स्वामी अंतरयामी, तुम कित भुवन छुपाया रे। बालकृष्ण ले आई नंद रानी, शंकर शीसन माया रे। चरण दोई चरणामृत लीना, सिंगी नाद बजायो रे। सुफल फलो मैया बालक तेरा, देखी शंकर सुख पाया रे। धन्य जसोदा धन्य नंद जी, कहे त कबीर पद पाया रे। मैं जोगी जस गाया बाला, मैं आनंद जस गाया रे। राम कहो पांजर के सुआ, राम कहो पांजर के सुआ, हज लगी खबर पड़त नहीं आंदा, धंधो करत सकल जग मुआ। राम कहो पांजर के सुआ, गड़ी रे सुतार कठेरो कीनो, हजु लगी साजनी चरणे अंतकाल रिपुहत मंजारी, हरि चलो जैसे जुआरी जुआ। राम कहो पांजर के सुआ, आसरा मेट 5 पनियारी, फूटत नहीं करम जल कुआ। कहे कबीर जने हरि रस चाख्यो, वाही के मुख हमारी तरस छुआ। राम कहो पांजर के सुआ, गोविंद गुना गोपाल गुना, गाइले रे गोविंद गुना। ऐसो समय बहुरी नहीं पे हो, फिर पछताए हो मेरे मना। गाइले रे गोविंद गुना, जिना तुमको तन मान धन दीनो, नैन नासिका मुख रसना। जाको रचित महासदस लागे, ताही न सुमजो एक छिना। गाइले गुना गोपाल गुना, बालपना शिखेल गमायो, तरुण भयो तब रूप गना।
બિરદ ભયો તબ આલસ ઉપજે, ઉઠી ગઈ હાટ કશું ન બના, ગાઈ લે રે ગોવિંદ ગુના, અધમ તેરે અધિકાર ભજન તે, જે જે આયે હરિ શરણ, ના માનો તો સાખી બતાવું, અજામેલ ગુણ કા સદના, ગાઈ લે રે ગોવિંદ ગુના, ધન જો બનયાન જોરી કો જલ જસ, ગટહી જાત ચીના પલહી પન, હસ જય જાની ભજો રઘુનંદન, નામ દેવ આય હરિ શરણા, ગાઈ લે રે ગોવિંદ ગુના. રાત સમે રઘુવીર જગાવે કૌશલ્યા માતારી, ઉઠો લાલજી બોર ભયો હે સુર નર મુનિ તકારી, બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક દેવતા સનકાદિક મુનિ ચારી, વાણી વેદ વિમલ જસ ગાવે રઘુકુલ જસ વિસ્તારી, બંદી જન ગાંધવ ગુણ ગાવે નાચત દે દે તાલી, સેન સહિત શિવ દ્વારે ઠાળે હોત કુતૂહલ બારી, ભરત શત્રુઘ્ન ચમર છત્ર લીએ જનક સુતા લીએ જારી, મેવા પાન લીએ કર લક્ષ્મણ ભર કાંચન की थारी, सुने पिय वचन उठे रघुनंदन नयन पलक समारी, चितवित भय किए चराचर मुदित भये नर नारी, करिय स्नान नानु प्रदीनो ले कर तिलक समारी, जय जयकार करत जन्म तन मन धन बलिहारी, आरती सी जगन्नाथ मंगला करी, परसत चरणार विंदया पधारी, गणन गणन घंट बाजे बेन बंसरी, बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी, दीपक ज्योत जगमगे श्री कांचनापुरी, नवबाती अगर तेल पाचक की जरी, इंद्र दमन सिंधु गाजे रोयनी खड़ा, मारकंड सेत गंगा आनंद बरा, एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी, रोम रोम रेन काळ का सोड, गरुड खांब सिंध पोर जातरा बरी, रामाने मोती पना ज्योत की जड़ी, रतन सिंहासन बिराजे बेन की छड़ी, 56 भोग नीत लागे होत हरि हरि, सूर नर मुनि द्वारे ठाड़े ब्रह्मा वेद वचरी, धन्य धन्य राघो श्री आज की घड़ी, धन्य धन्य राघो श्री आज की घड़ी. कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी, कृष्ण जी नाम बिना मिथ्या रे वाणी, प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नु नाम, कृष्ण जी वास्युरुडु गोकुळियो गाम, कृष्ण जी माता रे हमारे ने कृष्ण जी तात, सगाने सहोदर मारे कृष्ण जी प्रात, कृष्ण जी ये मामो मार्यो मासी सहारी, પોતાના જાનીને હરિએ મુગતિ આપી, કૃષ્ણજીએ અજામેલ તાર્યો માહુ તો પાપી, એક કોલીએ કૌતુક કીધું તેને અવિચલ પદવી આપી, કૃષ્ણજીએ ગુણ કાતારી અહલ્યાઓ તારી, કૃષ્ણજી ના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી,
દાસલડા બને રે હરિની ભગતિ જાની મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો યમદૂતવાણી કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી સુખ દુઃખ મન માનયાની ઘટ સાથે રે ઘડિયા ટાળ્યા તે કોઈ ના નવટડે રઘુનાથ ના ચડિયા સુખ દુઃખ મન માનયાની નળ રાજા સરખો નળ નહીં જેની દમયંતી રાની અળદેવ શ્રેવનમાં ભમ્યા ન મળે અન્ન ને પાણી સુખ દુઃખ મન માનયાની હરિશ્ચંદ્ર સરખા રાજીયા તારા લોચન રાની પોતાના સત્યને કારણે ભર્યા નીચ ઘેરે પાણી સુખ દુઃખ મન માનયાની સીતા સરખા સતી નહીં જેના રામજી સ્વામી તેને રાવણ હરી ગયો સતીમાં દુઃખ પામ્યા સુખ દુઃખ મન માનયાની પાંચ પાંડવ છઠ્ઠા દ્રૌપદીએ હૈડે વન વન ભટકતા છત્ર છાયે બેવ બેસતા સુખે નિદ્રા ન સોતા સુખ દુઃખ મન માનયાની શેઠ કહીએ તો સગાડ સાજેની ચંગાવતી રાની ખેલૈયા કુંવરને ખાડતા લઈને આસુન સરિયા સુખ દુઃખ મન માનયાની સર્વ દેવોને ચારે ભીડ પડી સમર્યા સારંગ પાણી પાવટ ભાગી ભૂદરે મહેતા નરસૈના સ્વામી સુખ દુઃખ મન માનયાની ઘટ સાથે રે ઘડિયા ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના ચોરસિયા આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમે પોતે વસિયા વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈ વાડી તો વૈકુંઠ સરીખી દર્શને દુખડા રે હરિએ અત્યારું ને દર્શન દીધું એ જસોદાના ચઈએ ગોકુળ થી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનાભ કહીએ અત્યારું એ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લહીએ વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુરુ જીવન કહીએ ગુરુ ગોવિંદ ના દર્શન કરતા 84 ટળીએ અધમોધરણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વચલ કહીએ મોહન ના સ્વામી ને ભજવા રાખો 28 હૈયે વાળીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાળીએ જઈએ આનંદ આરતી હરખય પાર હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધાર શાંતો દર્શન મેરે ત્રણ તાપ નિવાર જન્મ મરણ ભવ સાગર તાર શાક પાક મળી ભોજન પાવ શાંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાવ ઘેરે ઘેરે માંગલ હોત બધાય જન જીવન તહા બલ બલ જાય આનંદ આરતી હરખય પારા હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધાર
हरिजन आए मेरे प्राण आधार। स्वामी कृपा करो अति घनी, स्वामी रे मारा स्वामी कृपा करो अति घनी। बाजो कुविचार चल भक्ति देता हरि। जे छे मुक्ति भंडार पाए लागे करु बिना। स्वामी कृपा करो अति घनी, स्वामी रे मारा स्वामी कृपा करो अति घनी। बाजो कुविचार चल भक्ति देता हरि। जे छे मुक्ति भंडार पाए लागी करु बिना। 14 बांधो जीवना देव रघुपति के आन। वाट घाट रक्षा करो छोड़ावो चारे कान। गुरु गोविंदो नो खड़े किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु आप की जन गोविंद दियो बताए। सदगुरु संदेशा मोकले कचा बचा सब आओ। नाम चिंता मणि जीवना जे भावे सो पाओ। बोलो सदगुरु जीवनजी महाराज ना बाळ गोपाल ने मारा राम कबीर सर्वे भक्तों ने संतों ने प्रभात ना राम कबीर। सदगुरु श्री जीवनजी महाराज ने राम कबीर, नामदेव कबीर ने राम कबीर, वेद कृपा ने राम कबीर, पुण्यात्मा स्वामी परिवार ने राम कबीर, सर्वे संतों भक्तों ने प्रभात ना राम कबीर। संतो पृथ्वी विवाह આપણે 11મી કીર્તનનું આ મહત્વનું કીર્તન જે આપણે ગાઈએ છીએ અને સામાજિક પ્રસંગ એના વડે ઉજવીએ છીએ એનું અર્થઘટન પૂજ્ય જગદીશ મહારાજે કરેલું છે। તે ઉપરાંત પૃથ્વી વિવાહ પદ્ધતિ મંગલાચાર સંહિતા આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જગદીશ મહારાજની પ્રસ્તાવના વાંચતા હતા એ ક્રમમાં આગળ હિન્દીમાં છે એને લઈશું। તે પહેલા સંપૂર્ણથી શરૂઆત કરીએ જેથી ભાવ ભક્તિમાં લીન થઈ જવાય। स्वामी कृपा करो अति घनी बाजू कुविचार अचल भक्ति देता जे छे मुक्ति भंडार जे छे मुक्ति भंडार पाहे लागी करू विनती। स्वामी कृपा करो अति घनी बाजू कुविचार अचल भक्ति देता है जे छे मुक्ति भंडार जे छे मुक्ति भंडार पाए लागी करू विनती। जगदीश महाराज समझावे छे खुदा भक्त समाज में हर एक भक्त का स्त्री पुरुष जैसा भेद मानते नहीं है, किंतु उन सभी का देह एक समान पृथ्वी तत्व का ही बना हुआ है ऐसा समझा जाता है और नर नारी का ब्याह पर ब्रह्म परमात्मा के साथ किया जाता है। ऐसी भावना से लग्न विधि करते हैं, इसलिए इस विधि को पृथ्वी विवाह का नाम दिया है।
इन दंपति का पृथ्वी तत्व वाला देह को भगवान के साथ मिलाते हैं, ऐसा समझते हैं। इस दोनों पदों को बोलने की प्रथा है। गुजराती भाषा में ही इस प्रकार से लग्न विधि का आयोजन खुदा भक्तों में किया गया है। संत सुहागो ऐसा शीर्षक वाले पद का शीर्षक ही कितनी ऊंची भावना व्यक्त यानी कि प्रदर्शित करता है, ये सोचने जैसा है। संत तो परमात्मा की प्रेम भक्ति में लगा हुआ उनका प्रिय पात्र है और संत के लिए परमात्मा ही उनका वरेण्य स्वामी है। संत परमात्मा को अपना सब कुछ समर्पण कर देता है। उनके लिए परमात्मा के सिवा और दूसरा कोई आराध्य नहीं है। खुदा भक्त भी अपनी जात को शर्त के मुताबिक भगवान को ही अपना सर्वस्व सौंपने की भावना रखता है। संत सुहागों से समझने का है कि जैसे स्त्री का सौभाग्य उनका पति ही होता है, वैसे ही संत के लिए भगवान सौभाग्य का पात्र है। इस संत सुहागों का पद में कहा है, अपनी काया रूपी कन्या कुंवारी किस कारण से रह गई? उसका जवाब कहा है कि यह देह द्वारका राय जैसे भगवान को ही ढूंढती रहती है, इसलिए इसके सिवाय अपनी देह प्रेम भक्ति को किसी को भी अर्पण करेगी नहीं। केवल भगवान को ही पति के रूप में ब्याह करने की इच्छा रखती है। इस तरह यह दंपति को एक दूसरे से ब्याहा नहीं जाता है, लेकिन इन दोनों का लग्न विधि के द्वारा परब्रह्म के साथ ब्याह हो रहा हो, ऐसा समझा जाता है। भगवान की भक्ति गोपी भाव स्त्री भाव से करनी चाहिए। औरतों तो स्त्री होती है, इसलिए इनके लिए स्त्री भाव सुलभ है, लेकिन पुरुष वर्ग को भी स्त्री भाव की कल्पना के साथ गोपी भाव मन में रखना मुश्किल होगा। किंतु इस दुनिया में पुरुष भी संपूर्ण पुरुष नहीं है। इसके शरीर में भी कुछ मात्रा में स्त्री का चिन्ह मेमोरी डॉट्स दिखाई देते हैं। इसलिए स्त्री भाव से भगवान को भजने में वे उसको कोई मुश्किल बाबत नहीं है। मीराबाई ने गोसाई जी की मुलाकात मांगी, तब इन्होंने इनकार करके कहा कि वे किसी भी औरत का मुंह नहीं देखते हैं। तब मीराबाई ने कहा था, मैं समझती थी वृंदावन में कृष्ण के सिवा और कोई पुरुष नहीं है, लेकिन आज मालूम हुआ कि दूसरा भी एक पुरुष ब्रिजमंडल में है। ऐसा सुनते ही जीव गोसाई ने मीराबाई की मांग का स्वीकार किया था। मतलब
यह है कि गोपी भाव से भक्ति करनी चाहिए। भक्त मलुकदास ने गाया है राग वेरावर, भाई रे सोही सुहागन नार, भाई रे सोही सुहागन नार, जाके राम भरथारा, भूख मांगो सुख देत है, जग जीवन पारा। मलुकदास जी कहते हैं, सच्ची नारी पतित्व वाली औरत प्रभु प्रेम की अधिकारिणी तो है, जिसका आराध्य स्वामी भगवान राम हो, क्योंकि ऐसे स्वामी के पास जो भी मुंह से मांगोगे वही सभी मनोकामना पूर्ण कर देता है और अपने जीवन को भवसागर से पार लगा देता है। आगे कहते हैं, भाई रे कबहू ना चढ़े रंडापना, भाई रे कबहू ना चढ़े रंडापना, जाने सब कोई, आदि अमर अविनाशी ये, जाके नाश न होय, जाके नाश न होय। भगवान तो आद्य से अमर अविनाशी, जिसका कभी भी नाश न हो वैसा है। ये तो सब कोई जानते हैं, इसलिए भगवान के साथ विवाहित जीवन में कभी भी ठंडापा की संभावना नहीं होगी। आगे लिखते हैं, आधे ही दिन दोए की, आधे ही दिन दोए की, सुनो मत मेरी, कहासु करो सनेहरा, अंत विपत घनेरी, अंत विपत घनेरी। मेरा कहना सुनिए, यह देह तो 2 दिन की होवे ऐसी भंगुर है, इसलिए सवाल है कि किसके साथ स्नेह किया जाए, क्योंकि आखिर तो अत्यंत विपत्ति ही होगी। अंत में कहते हैं, भाई रे ना ही उपजे ना ही बस, भाई रे ना ही उपजे ना ही बस, संतन सुखदाई, कहत मलुक जिन के, तासु प्रीत लगाई, तासु प्रीत लगाई। मतलब मलुकदास कहते हैं, संत ही सुख देने वाले होते हैं, इसलिए उन्हों से प्रीत लगेगी तब जन्म मरण आदि नहीं होगा। बाबा कबीर ने कहा है, कबीर सुहागी सो जानिए, कबीर सुहागी सो जानिए, जाको हरि भक्ति पास, रात दिवस बिसरे नहीं, रात दिवस बिसरे नहीं, तो सुहागी दास। बाबा कबीर जी कहते हैं, जिसके अंतर में हरि की भक्ति है उसे ही सुहागी समझा जाना चाहिए। ऐसा भक्त दिन रात भगवान को भूलते नहीं है, मतलब कि भगवान के साथ ऐसी लगनी रखनी चाहिए, ऐसी लगनी रखकर भक्ति करनी चाहिए। इस संत सुहागी पद में अध्याय जी कहते हैं, इंद्र ईश्वर ब्रह्मा वेद वाचे, निर्गुण नारायण केन राचे।
इंद्र, ईश्वर, ब्रह्मा वेद वांचे, निर्गुण नारायण कैमे न राचे, अर्थात भगवान निर्गुण एवं त्रिगुणों से पर है और वेदों तो त्रिगुणात्मक होते हैं। इसलिए इंद्र, ब्रह्मादि या चाहे कोई भी वेद पठन करे तब भी भगवान खुश नहीं होते हैं। गीता अध्याय 2 हेमा इसमें कहते हैं, गुणों से पर होके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। त्रैगुण्यस्य विषया द्विविधा निस्त्रे गुणाओ भवार्जुन, निद्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्यागक्षेम आत्मवा। यानी वेदों त्रिगुणात्मक विषय वाले हैं। तुझे तीनों गुणों से रहित, सुख दुखादि द्वंद्वों के बिना, धैर्यनिष्ठ, योग क्षेम की चिंता रहित एवं आत्मनिष्ठ बनना चाहिए। जब भगवान वेदवाणी से प्रसन्न नहीं होते तब कैसी वाणी से इसकी भक्ति करनी चाहिए, उसका खुलासा अध्याय जी करते हैं। अध्याय जी ने लिखा है, तुल्य सा वाणी हरि देहु जानी, तमो भक्ति करो पर ब्रह्म ताणिये। तुल्य सा वाणी हरि बेहु जानी, तमो भक्ति करो पर ब्रह्म ताणिये। यानी कि सकाम भक्ति वाली वेदवाणी जैसी सकाम भक्ति वाणी को छोड़कर निष्काम युक्त जो भी वाणी हो, ऐसी यानी निष्काम की ही भावना की बराबरी तुल्यता वाली को पहचान कर भगवान भक्ति कीजिए। और ऐसी निष्काम युक्त ही यह संत सुहागो इत्यादि अध्याय जी के 28 कीर्तन की वाणी है। इसलिए परब्रह्म के साथ दुल्हा दुल्हन के ब्याह में उनके कृष्ण का अनंत स्वरूप से परोक्ष रूप में ब्याह का स्वीकार करेगा। लेकिन वेद मंत्रोच्चार की कर्म कांड की विधि से इंद्रादि या ब्रह्मा जैसे भी ब्याह कराने वाले होंगे तो भी भगवान को ऐसी वेदवाणी मंजूर नहीं है। संत सुहागों के पद के बाद पृथ्वी दौड़ में से एकादशी वाली आद का गान विधि में गाते हैं। यहाँ एकादशी के दिन पृथ्वी का ब्याह भगवान के साथ होता है ऐसा कहा है। लेकिन दुनिया वाले कर्म कांड में लगे हुए लोग जिस व्रतों वाली एकादशी को मनाते हैं और उस दिन में उपवास का रिवाज चलाते हैं, ऐसे एकादशी के लिए यह एकादशी शब्द नहीं है। यहाँ तो शब्द से ऐसी भावना का संकेत किया है कि सभी एकादशियों में से केवल एक ही मात्र चैत्र मास वाली एकादशी के दिन में पृथ्वी के ब्याह को किया जाता है। ऐसा क्यों कि यह चैत्र मास हिंदुस्तानी भारतीय पहला मास है। चैत्र मास हिंदुस्तान में भारतीय कैलेंडर के मुताबिक
शुरू होता है पहला मास, और इसमें भी 11वां दिन को ब्याह के लिए पसंद किया है। इसके पीछे यह संकेत है कि हमारे लिए साल भर के सभी दिन एकादशी के बराबर ही भगवत भक्ति करने के लिए श्रेष्ठ, उत्तम, पवित्र है। केवल एकादशी के दिन को ही हम भक्ति करने के लिए श्रेष्ठ नहीं कहेंगे। भगवत भक्ति तो किसी भी क्षण में करोगे तब भी तुम्हारा कल्याणकारी समय बन जाएगा, और बिना भक्ति के गुजरे हुए एकादशी के सिवाय का समय से सारे जीवन को बिगाड़ कर नष्ट कर देते हैं। मतलब भक्ति करने के लिए सभी समय अनुकूल है। कोई भी घड़ी, ग्रह, नक्षत्र आदि इसमें जुल्मीगार नहीं बन सकेगा। एकादशी की आद नाम वाली आद एकादशी की महत्ता बढ़ाने के लिए या एकादशी की प्रशस्ति के लिए नहीं है। इसमें तो एकमात्र चैत्र की एकादशी के सिवा दूसरा कोई उल्लेख इसके बारे में नहीं है। शुभ अवसर पर तिथि, वार, घड़ी, मास, ग्रह, नक्षत्र, राशि इत्यादि से परेशानी होने की संभावना के डर के मारे इनके अधिष्ठाता देवादि से शांति को मांगने के लिए ग्रह शांति इत्यादि की विधि निर्बल मन वाले कराते हैं। लेकिन भगवत भक्त ऐसे दुष्ट ग्रह आदि से डरते नहीं है, क्योंकि ये सब के सब भगवान की ही सेवा करते हैं और भक्त उसी भगवान का शरणागत है। तो इन कायर ग्रह आदि से क्यों डरेंगे? एकादशी तो धर्म के नाम पर धर्म का उपहास है। पुण्य पाने का यह तरीका हास्यास्पद है। उपवास तो एकादश इंद्रियों के नियंत्रण को समझना चाहिए, लेकिन मनोरंजन मानो या मन मनाने के लिए जोर शोर से यह रीति प्रचलित हो गई है। जीवन जी महाराज ने एकादशी को विष्णु भक्ति की साहूकार चोर कही है, क्योंकि हमें विष्णु भक्ति से विचलित कर देती है। जीवन जी महाराज ने एकादशी को विष्णु भक्ति की साहूकार चोर कही है, विष्णु भक्ति से विचलित कर देती है इसलिए, और खुद अपनी भक्ति में विष्णु भक्ति के नाम से हमें लगा देती है। बाबा कबीर ने एकादशी की अवगणना की है, उसकी साखी ये है, देखिए। एकादशी लूंगी करू, तीर्थ करू गुलाम, एक राम ही रम रहा, सासु करू सलाम। बाबा कबीर जी कहते हैं, एकादशी लूंगी करूं, एकादशी को मैं तिरस्कृत करता हूं और तीर्थ करूं गुलाम, तीर्थ को गुलाम नौकर जैसा तुच्छ करूंगा। एक राम ही रम रहा, मैं तो केवल जहां राम की भक्ति है वहां अपनी अनुरक्ति रखकर भक्ति भाव से नम्रता रखूंगा। एकादशी को जगन्नाथपुरी के मंदिर में अधोमुख से लटकाई गई है।
ऐसी दुर्दशा से उसी के साथ वर्ताव किया गया है। यानी जगन्नाथपुरी में एकादशी को ग्राह्य नहीं रखते हैं। उदा भक्त समाज में तो एकादशी का कहीं भी स्थान नहीं है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन उदा भक्त रामकृष्ण की अनन्य एक निष्ठा वाली भक्ति करते हैं। इसलिए कनिष्ठ देव देविया हो, अगर तीर्थ, व्रत, जप, तप आदि की उपासना नहीं करेंगे। संत सुहागों के पद में कहा है, पान पूजा मन प्रतीत साचे, हरि ओधर्या ते जे रया वाचे। पान पूजा मन प्रतीत साचे, यानी कि जिसकी पानी ग्रहण करते हैं उस व्यक्ति के प्रति सच्चे दिल से, वफादारी पूर्वक, आदर मान से भक्ति भाव रखोगे, तब भगवान आपका जरूर उद्धार करेंगे। सौभाग्यवती स्त्री का तो यह मुख्य लक्षण है, क्योंकि व्यभिचारिणी पर पति नाराज होते हैं। पत्नी भी व्यभिचारी पति से रूठती है। वैसे ही भक्त भी यदि भगवत में आनंद की आराधना करेगा, तब भगवान भी उनसे नाराज होगा। लग्न गीत शादी के अवसर पर पूर्ण भक्तिपूर्ण गीत गाने से शोभा में अभिवृद्धि होती है। लेकिन इस मौके पर शादी को संस्कार प्रदान करने का अवसर कहा जाता है। तब भक्तिमयी मांगलिक गीत गाने के बजाय स्त्रियां विभत्स गाली गलौज जैसे गीत गाती है। किंतु उदा भक्त तो उदा यानी उत्कृष्ट उच्च प्रकार की भक्ति करने वाले होते हैं। इसलिए हमें केवल संस्कार सिंचने के अवसर पर हमारी स्त्री वर्ग की नारियां भक्तिपद गीतों को ही गाती है। शादी के अवसर पर भक्ति गीत का प्रसंगों अनुरूप नहीं लगेगा, लेकिन उदा भक्त समाज ने ऐसे गीत को चुना है कि सुनने वाले को लग्न गीत ही गाते हैं ऐसा लगेगा। उदा भक्त की बहनें विभत्स गीत नहीं गाती। लग्न के प्रसंग के अनुरूप ही यह लग्न गीत है और साथ साथ भक्तिप्रद भी है। ऐसे विशिष्ट लग्न गीत अन्यत्र कहीं भी मिलेंगे नहीं। हमारे पास ऐसी भक्ति की संपत्ति है, इसका हमें गर्व होता है। जब ये गीत बहनें गाती हैं, तब सारा पर्यावरण अति रमणीय, आकर्षक बन जाता है। हमारी गरिमा ऐसे गीत वाली भक्ति धन की उपलब्धि में ही है। संतो, ये है पूज्य जगदीश महाराज ने बताई हुई लग्न विधि और उसका महिमा। છેલ્લે પૂજ્ય જગદીશ મહારાજે આશીર્વાદની જે સમજણ આપી છે
એમાં ઇંગ્લિશમાં લખ્યું છે, મેરેજ ઇઝ અ બુક whose first chapter is in poetry, second in prose, and rest all in grammar. લગ્ન એવી બુક છે કે જેનું પહેલું પ્રકરણ કાવ્ય છે, બીજું પ્રકરણ પ્રોઝ એટલે કે આપણે એનું મહત્વ સમજીએ, અને છેલ્લે ગ્રામર અને એને વ્યાકરણ એટલે કે આપણે પદ્ધતિસરનું જીવન જીવીએ. સદા સર્વદા આદિ અને અંત સુધી નિર્વિકારી, નિર્લેપ, નિરંતર આપનું દાંપત્ય સુખ અખંડ રહો, એવો જગદીશ મહારાજ આશીર્વાદ આપે છે. આગળ કહે છે, પ્રેમ ભક્તિનો પ્રકાશ તમારા જીવન પંથને ઉજાડે એવી હરિ ગુરુ સંતની કૃપા હજો. હરિ ગુરુ અને સંતની કૃપા હજો. પછી આગળ કહ્યું છે, પ્રભુ તમને સુખ, સમૃદ્ધિ, આરોગ્ય અને પ્રેમાનંદમાં અભિવૃદ્ધિ રાખે. પછી આગળ કહ્યું છે, સંસાર સાગરમાં સદગુરુ કબીરની નિર્ભય ખાટનું સુકાન સદગુરુ કબીરજી સંભાળે એવી અભ્યર્થના છે. પ્રેમ એ પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ, તમારામાં જાગૃત રહો. સ્વામી જગદીશચંદ્ર યદુનાથના શુભાશીષ. તો સંતો, આપણા સદગુરુ આપણને જે મહત્વ સમજાવે છે તે જ આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારીએ, અને અંતે સંપૂર્ણથી આજના સત્સંગને વિરામ આપીશું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હે, જે છે મુક્તિ ભંડાર ભાઈ લાગી કરું વિનતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હે, જે છે મુક્તિ ભંડાર ભાઈ લાગી કરું વિનતી. સંતો, સાંજે સંધ્યા આરતીમાં જોડાજો. હરિગુણ ગાવા, હરિરસ પીવા આવે તેને તેડી લાવજો. અને આવતીકાલે પ્રભાતના સત્સંગમાં ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને સપ્રેમ રામ કબીર. રામ કબીર, પ્રભાતના રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તો રામ કબીર, રામ રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, સર્વેને રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર.